हाय, मैं हूं अपूर्वा शेठ और मैं स्वागत करता हूं आपका इस बहुत ही स्पेशल कॉन्वर्सेशन पे जहां हम जुड़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स स्मार्ट इंडिया लिमिटेड की मैनेजमेंट के साथ। इलेक्ट्रॉनिक्स स्मार्ट का पब्लिक इशू 4 अक्टूबर को खुल रहा है। कंपनी की मैनेजमेंट से बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिस्टर करण बजाज, जो कि फुल टाइम डायरेक्टर और सीईओ है। करण जी, वेलकम टू आवर शो। अपना कीमती समय निकालकर हमारे साथ बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू अपूर्व जी। मेरी टीम से बातचीत करने के लिए जुड़ रही है पारुल शर्मा, जो कि कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर ट्रैक करती है। और इससे पहले कि हम करण जी से बात करें, मैं आपको आईपीओ की डिटेल्स बता दूं। तो आईपीओ का प्राइस बैंड है 56 रुपीज से 59 रुपीज पर शेयर। इश्यू खुल रहा है 4 अक्टूबर को, इश्यू बंद होगा 7 अक्टूबर को। मिनिमम बिड लॉट 254 इक्विटी शेयर्स का है और जो अप्रोक्सीमेट आईपीओ साइज है वो 500 करोड़ रुपए का है। अब कंपनी इन फंड्स को जो यूज करने वाली है वो मुख्य तौर पे 4 मेजर पर्पसेस है। तो सबसे पहला है फंडिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक्सपेंशन के लिए। तो इसमें कंपनी 111 करोड़ रुपए लगाएगी। इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए 220 करोड़ रखे गए हैं। और जो इनकी बोरोइंग्स है उनको रीपे करने के लिए 55 करोड़ रुपए रखे गए हैं। और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए 115 करोड़ रुपए रखे हैं। सो अब हम शुरू करते हैं अपने सवाल जवाब से। तो सबसे पहला सवाल करण जी से मेरा ये रहेगा कि व्हाई शुड समवन इन्वेस्ट इन इलेक्ट्रॉनिक्स स्मार्ट इंडिया लिमिटेड? व्हाट मेक्स इलेक्ट्रॉनिक्स स्मार्ट इंडिया स्पेशल एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर बिजनेसेस? राइट। सो अपूर्वा जी, ये कॉम्पिटिटिव सिनारियो है काफ़ी। इंडिया का मार्केट इतना बड़ा है, इतना ग्रोइंग मार्केट है। और लास्ट 40 इयर्स पे वी बीन ऑपरेटिंग द कंपनी। और हमारा प्रेजेंस मेजरली आंध्र और तेलंगाना में है। और लास्ट 40 साल से हम एक ही क्लस्टर से ग्रो करते हुए आए हैं। तो आज हमारी 17 दुकानें तेलंगाना अप कंट्री मार्केट में हैं, 22 दुकानें हमारी आंध्र प्रदेश में हैं और 48 तकरीबन हमारी दुकानें मल्टी ब्रांड स्टोर्स हैदराबाद सिटी में हैं। तो एक सिटी में, एक ज्योग्राफी में रह के हमारा जो टॉप लाइन आज है, आप देख रहे हो नंबर। सो तो हमारे पास अभी काफ़ी स्टेट्स है, काफ़ी एक्सपेंशन का प्लान है हमारा। वी जस्ट स्टार्टेड आवर ऑपरेशन ऑन द 14th ऑफ अगस्त इन दिल्ली एनसीआर। हमने 8 दुकानें एक साथ खोली थी। तो हमारा प्लान ये है कि स्लोली एक क्लस्टर में जाएँ, वहाँ पर पहले डेवलप करें और वहाँ से ग्रो करें। तो आई थिंक लुकिंग एट द नंबर्स दैट वी डिलीवर, हमारा एबिटा मार्जिन इज़ अराउंड 7% विद अ पैट ऑफ अराउंड 2.5%। तो आई थिंक इतनी कॉम्पिटिटिव स्टिफ सिनेरियो में हम लोग जो नंबर्स डिलीवर करते हैं, आई थिंक आप देख सकते हो कि हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है आगे नए मार्केट्स में जाके ग्रो करने का। दैट इज़ वेयर विल बी इन्वेस्टिंग द आईपीओ मनी एज़ वेल। तो हमारा 500 करोड़ जैसे आपने बताया पहले, विल बी इन्वेस्टिंग दैट मनी फॉर मोर स्टोर्स एंड द ग्रोथ कमिंग इन द फ्यूचर। I wanted to ask what will be the factors that will drive the growth for the company in terms of revenue and gross margins? सो पारुल जी, हम लोग नंबर ऑफ स्टोर्स तो खोल ही रहे हैं। साथ में हमारा प्लान है तकरीबन अगले 3 साल में तकरीबन 60 और दुकानें खोलने का। बट इसके साथ हम लोग प्रोडक्टिविटी बहुत देखते हैं कि प्रोडक्ट मिक्स कैसा हो स्टोर में, कि हर एक कैटेगरी से कंट्रीब्यूशन कैसे आ रही है। एंड बैलेंसिंग दैट राइट आउट एंड गेटिंग द राइट फार्मूला फॉर दैट इज़ वेयर वी मेक द एडिशनल मार्जिन्स। और जहाँ पर पॉसिबिलिटी है आप अपने नंबर्स डिलीवर अच्छी तरह कर पाएँ। तो प्रोडक्टिविटी पर ग्रोथ इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। और वहाँ पे हमारा कॉन्संट्रेशन होता है कि हम लोग जैसे कोई स्टोर खोलें तो देखें कि पहले 1 साल में कितना बिज़नेस हो रहा है, दूसरे साल में कितना हो रहा है, वहाँ से कैसे ग्रोथ कर पाएँ हम लोग। एंड देयरफॉर ग्रो द स्टोर फ्रॉम देयर ऑन। सो नंबर ऑफ स्टोर्स खोलना इक्वली इम्पोर्टेंट है, बट मेकिंग श्योर दैट जो एक्जिस्टिंग स्टोर्स हैं, सेम स्टोर ग्रोथ भी आए, सेल्स एंड प्रोडक्ट मिक्स आपका मेंटेन रहे, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। जैसे आपने अभी स्टोर्स के बारे में बात की, हाँ जी। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि आप इस साल और अगले 3 सालों में कितने स्टोर्स ओपन करने का प्लान कर रहे हैं? So FY23 में we've already opened 8 stores in Delhi and couple of stores back in AP and Telangana. Or going forward, by end of Q4 FY23 would be doing more stores. So FY23, FY24 and 25 on an average, we would be opening around 58 stores. तो आपने मार्जिन्स की भी बात की है, तो जस्ट आई वांटेड टू नो कि जो आपका मार्जिन मिक्स है तो वो लार्ज अप्लायंसेस से आई एम श्योर कि शायद बड़ा आता होगा। कैन यू गिव अस अ पिक्चर अबाउट व्हाट इज योर मार्जिन अक्रॉस दी सेगमेंट्स दैट यू ऑपरेट इन? करेक्ट अपूर्व जी, जैसे आपने बोला कि लार्जर अप्लायंसेस में डेफिनेटली थोड़ा मार्जिन ज़्यादा होता है कंपेयर टू लॉट ऑफ अदर प्रोडक्ट कैटेगरीज। सो एक राइट प्रोडक्ट मिक्स होता है, या जो आप ब्रांड से डील करते हो डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरीज ऑफ द ब्रांड्स दैट यू आर इन, तो वहाँ पर थोड़ा मार्जिन आपको एक्स्ट्रा होता है। बट हमारे पास कोई व्हाइट लेबल या प्राइवेट लेबल नहीं है, यूजुअली उसमें थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा मार्जिन होता है।
सो हमने उस पे भी एक सवाल सोचा था कि बहुत सारे जो लार्ज प्लेयर्स है, नेशनल लेवल प्लेयर्स है, वो अपने खुद के लेबल भी रखते हैं। तो आपने अब तक ये स्ट्रैटेजी नहीं रखी है। आप आगे आपके कोई प्लान्स है कि आप अपने खुद के प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे? करेक्ट। सो हमको जैसे लगेगा कि आगे फ्यूचर टाइम में अगर हमारी जरूरत है कोई प्राइवेट लेबल या वाइट लेबल करने की, तो देन वी माइट डेफिनेटली लुक इनटू दैट अपॉर्चुनिटी एज वेल। सो राइट नाउ वी डोंट फील दैट इट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्ट मिक्स और द ब्रांड मिक्स दैट वी हैव, कि हमको अभी वी आर लूजिंग आउट कस्टमर्स या हमें जरूरत है अभी। बट गोइंग डाउन इन द फ्यूचर डेफिनेटली इफ द अपॉर्चुनिटी अराइज वी वुड डेफिनेटली लुक इनटू दैट। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि आपकी जो ऑनलाइन चैनल की एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी है, इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएं। तो FY22 की जो सेल्स थी वो FY21 की सेल्स से थोड़ी कम रही है। तो आप इसे कैसे बढ़ाएंगे और इसे सब्सटैंशियल पोर्शन कैसे बनाएंगे अपने रेवेन्यू मिक्स का, इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ बताइए। राइट। सो अपूर्व जी, हमारा जो ऑनलाइन स्ट्रैटेजी है टुडे, इट इज लिमिटेड ओनली टू द मार्केट प्लेस सेलर्स इन द कंट्री, द बिगर पोर्टल्स दैट वी वर्क विद। तो हमारा प्लान उन्हीं के साथ आगे बढ़ना है थोड़ा अभी फिलहाल के लिए। बट टेक्नोलॉजिकली बैकएंड में वी आर रेडी विद एन ओमनी चैनल स्ट्रैटेजी एज वेल। तो जब हमको लगेगा वहां पर भी जैसे डिमांड आ रही है या हमको लग रहा है कि वी लूजिंग आउट ऑन सम सेल्स, will be available online immediately. So हमारे strategy is ready in terms of technology, but right now we are focusing more on the offline play going forward. तो एक बार हमारा क्लस्टर थोड़ा और बढ़ जाए और एक्सपेंशन फॉर आंध्र तेलंगाना एज वेल एज फॉर दिल्ली एनसीआर जो हमारा प्लान है वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद अगर अपॉर्चुनिटी आती है तो दे विल बी अवेलेबल देयर, बट टेक्निकली वी आर रेडी विद इट। So I see that you are the dominant player in the South India, and जैसे आपने बताया आप अभी expand कर रहे हैं NCR region में, which is like 5.5% of the consumer durable market in India. So we just wanted to ask, what is the reason behind not picking Mumbai or the Western India and going directly to the north? सो पारुल जी, जब हम लोग ने प्लान किया था एक्सपैंड करने का, सो वी वर लुकिंग डेफिनेटली एट द मार्केट साइज। दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर अस, बिकॉज द एफर्ट्स दैट वी वुड हैव टू पुट इन अ स्मॉलर मार्केट और अ बिगर मार्केट वुड हैव बीन इक्वल। तो दिल्ली डेफिनेटली इज अ वेरी एंटाइसिंग मार्केट, अ वेरी बिग मार्केट, वन ऑफ द ग्रोइंग मार्केट्स इन द कंट्री टुडे। एंड दिल्ली के साथ आपको क्या होता है एडवांटेज, द बिगेस्ट एडवांटेज यू गेट the NCR as well, you know, so you're talking about Gurgaon, Noida, Greater Noida, Faridabad, Ghaziabad, Meerut पास में है। We're talking about an expansion plan not only in Delhi city but around in and around Delhi NCR as well. So all put together is one of the largest markets in the country. At the same time, the product mix that we are strong in, it is very similar to what the Delhi market demands. So the brands that we deal with. So that was one of the reasons that we would enter in that market. And looking at the competition scenario, looking at the organized play, because the western and the southern part of the country is more well organized in terms of the larger players. So we thought there is an opportunity and a gap in that market. So that is where we thought we'll start off. इसके Delhi NCR हमने choose किया। तो और looking at the projections of opening stores, it had been more viable for us to be in one cluster, जहाँ पर हमको लग रहा है कि अगले 3 साल में हम 30 से 35 दुकान सेटअप कर पाएंगे वो रीजन में। So that was going forward एक future plan के हिसाब से that was the right market for us. That is why we selected NCR. So what is your market share in South and the whole of India, and how do you plan to increase it? So market share wise, I would say that we are the leaders there in few categories, and in terms of the revenues that we generate out of one geography. But exactly market share product wise, yeah, any market share number for me would be a little difficult to share with you. So how do you plan to increase the market share across regions? Correct. So, sir, as I mentioned earlier, so the strategy is to make sure the productivity is high. तो नंबर ऑफ स्टोर्स तो हम ऐड करते रहेंगे जहाँ पर हमको लग रहा है कि मार्केट्स ग्रो हो रही है या हमारा मार्केट शेयर कम है वो मार्केट में जहाँ पर कंपटीशन इज डूइंग बेटर देन अस। तो डेफिनेटली दोज मार्केट्स वी विल बी ओपनिंग मोर स्टोर्स एंड एक्सपैंडिंग, एंड देन इट इज ऑल अबाउट लुकिंग एट हाउ द ट्रेंड्स आर चेंजिंग, बिकॉज हमारा इंडस्ट्री इज वेरी डिपेंडेंट ऑन द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एज वेल। लाइक राइट नाउ भी 5G जब डिवाइसेस आएंगे तो that is a good growth prospect coming in. So mobile phones में churn होगा, you're talking about a lot of post COVID products that have been more prevalent, जैसे vacuum cleaner हो गया, dishwasher हो गया. So a lot of people are investing in lifestyle products as well. So it is a few of these product categories जो पहले more like a lifestyle या luxury थी, आज have become necessities in every household. So we see the underpenetrated opportunity in the market where with the population, the GDP growth coming in, we feel that there is going to be the market which is going to be upside where people are going to invest in better lifestyles and buy out these products in their houses.
आजकल लोग ऑनलाइन शॉपिंग ज्यादा प्रेफर करते हैं, फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन्स, क्योंकि उन्हें अच्छे डील्स एंड ऑफर्स मिलते हैं ऑनलाइन। तो इसको देखते हुए, हाउ आर यू प्लानिंग टू हैंडल द कंपटीशन फ्रॉम द ऑनलाइन रिटेलर्स? So, ma'am, I think it is a very complementary business to our industry, for retailing overall, where customers have access to online at the same time, access to great offline presence as well. So, both the markets are growing, both the segmentations are growing, but there is a vary of products or the brands or the categories that sell online and offline. So, product तो line वो दिखता वही है, but there is a huge differentiation in terms of what sells online, what sells offline, and it is all about the experience that you give out on the floor, and that is where the retailing or the benefit of the personal touch is always there in the retail store. So that is what we try to develop, the soft skill training on the storefront. How do we differentiate in terms of, or how do we give out a better experience to customers, because retail में strength यही होता है कि customer जब store पे आता है, so they want to touch and feel the product, know about the product. तो जब customer आपके पास time spend करता है, it is very important that you give out the right information and give out the best solution out to the customer, rather than just giving out a pricing per se. So that is where the difference of online and offline is, where you can interact with the person and understand better. So that is where we focus more on कि हम customer का experience कैसे better कर पाए. Your revenue per store for FY22 is around 40 crore rupees. हाँ जी. How is it comparable with your peers, and how long does it take for a store to break even? So, sir, when we look at our stores, we have multiple formats as well. So there is a huge number of stores that we operate under the exclusive brand outlet category as well, where we have tie-ups with these individual brands. So these stores, the productivity is a little lesser because the sizes of the stores and the product mix is a little different than our multi-brand outlets. So on an average, we would look at a similar store productivity going forward as well. And in terms of a competition, I think the larger players are all in line with this. So there are a lot of larger players in their respective states and their respective regions. So industry is there quite big in every periphery of the country, where you have opportunity to grow at the same time. So I think the numbers are going to be very similar to everybody, the large format ones compared to a mom and pop store. So in terms of duration to break even, what time does it require? So, sir, with our numbers that we project, it is usually 14 to 12 to 14 months that we look at store to break even. So that would be an ideal time for us to break even per store. So you are currently involved in the legal proceedings against Bajaj Electricals for a Yes. copyright case. Yes, So ma'am. where do we stand right now? So then the matter is in the Bombay High Court, and so we've opted for the legal opinion. And so once the matter is sub judice, it would be not much for me to mention about it. The matter has been presented in front of the Bombay High Court, and we're waiting for the due course to follow from there on. And all the details have been mentioned in the RHP as well. Just to follow up on that, why doesn't the company uses a uniform name across the India? Like you have stores in the south named Bajaj Electronics, and the ones in the NCR are named Electronics Mart. So, ma'am, that was a strategic decision that we had taken, because Electronics Mart is our parent company name. So we thought that going forward, if let's experiment with a new brand, because for us, customers back home in AP and Telangana versus customers in the NCR region would be a completely different TG and a different audience altogether. So we didn't feel that they had to be a necessity of using the same name. So right now we've strategized and we've gone ahead with a different name now. So what is the long-term debt as on Q1 FY23? And another follow-up question on that is that the finance costs have been steadily rising for the company, and with interest rates moving higher, how will it affect your margins? So definitely, as you said very correctly, so there is a portion of term loan repayment also, which is around 50 odd crores that will go out from the IPO process. तो ये वाला पैसा हमारा जो हमने थोड़ी properties ली थी पहले, वो properties का repayment के लिए है. But then FY21 Q1 of FY23 we've added few more properties, and so हमारा majorly debt होता है towards working capital. So depending on the two major seasons, that is Q1 जो summer period होता है जो काफी बड़ा होता है, and Diwali Dasera wala jo period hota hai, that is usually Q3. So these two quarters are where the working capital requirement goes up. So that is where you would see a higher number, and that would also reflect on the 31st March numbers as well. So apart from those working capital requirements, what is the long-term debt that you would be left with after the IPO proceedings?
Sir, around 140, 150 odd crores. Okay, and so how are you planning to manage your interest costs? So definitely the negotiations keep on going with the banks all the time. But we are aware of the rate changes in the rate of interest. The idea is always, to look at controlling that as well. So we keep that under control and check always. And going forward, we don't intend to keep on raising our debt at the same pace that we've done, because we had to expand in Delhi NCR, and a bigger market demanded that kind of an investment. That is where we wouldn't be replicating almost a similar strategy in any other state. So I think that's all from our side. We would like to thank you for coming on our show and talking to us. I wish you all the best, and your company and your team all the best for the IPO, and we wish you good luck. Thank you, Apurva. Thank you, Parul. It was lovely talking to you. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Thank you.